नमस्कार। आज से 35 वर्ष पहले हम भारतवासियों का एक सपना साकार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमने अपने देश का संविधान लागू किया था और अपने को प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। इस अवसर पर मैं जसदेव सिंह और मेरे साथ कमांडर श्याम वर्मा, गुड मॉर्निंग, केशव पांडे, नमस्कार, और राजीव मेहरोत्रा, गुड मॉर्निंग एंड रिपब्लिक डे ग्रीटिंग्स। आप सबको गणतंत्र दिवस के अवसर पर दूरदर्शन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, बधाई। दिल्ली का ये राजपथ जहां से इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं जीवंत हो उठा है एक बार फिर। कुछ ही देर में गणतंत्र दिवस परेड आरंभ होगी, जिसकी सलामी लेंगे राष्ट्रपति यानी जैल सिंह, और तब इस राजपथ पर दर्शन होंगे भारत के सैन्य बल, युवा शक्ति, विकास और प्रगति, और उसके साथ ही सांस्कृतिक वैभव के। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड आप तक पहुंचाने के लिए उसकी झांकियां हमने 6 कैमरों की व्यवस्था की है। एक कैमरा तो वो है जिससे हमारे चित्र इस समय आप तक पहुंच रहे हैं, और दूसरा कैमरा यहाँ कमेंटेटर बॉक्स पर ठीक हमारे पास है। तीसरा कैमरा राजपथ पर इंडिया गेट की तरफ फोटोग्राफर्स स्टैंड पर रखा गया है। इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे राष्ट्र की ओर से। वो दृश्य दिखाने के लिए वहां 3 कैमरे रखे गए हैं। एक कैमरा इंडिया गेट की छत पर है, जहां से आप परेड के विहंगम दृश्य देख सकेंगे, और 2 कैमरे इंडिया गेट के नीचे उस स्थान पर रखे गए हैं जहां अमर जवान ज्योति है। एक कैमरा अमर जवान ज्योति के बराबर निकट ही, और दूसरा उसके दूसरी तरफ। और अपने समाज को देने में सफलता की है। इस तरह की अनेक अन्य सफलताएं भी गिनाई जा सकती हैं, जिन पर हम खुशी और गर्व कर सकते हैं। लेकिन हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों को नहीं भूल जाना चाहिए जो उन्होंने 26 जनवरी 1950 को राजपथ के दोनों ओर का दृश्य। लोग सुबह से ही परेड देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। देश के हर भाग के लोग, भारत के लोग। वर्षों पहले 1930 की पहली जनवरी के पहले मिनट में रावी के तट पर देशवासियों ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक संकल्प लिया था, पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताए अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, विदेशी गुलामी से मुक्ति प्राप्त की। 15 अगस्त 1947 को freedom was obtained for India by its masses, who faced untold repression under the British while struggling to free the country from the foreign yoke. But howsoever much the violence perpetrated on them, the Indian masses remained non-violent
and bore their wounds and injuries stoically, a price to be paid for freedom. The All India Congress Committee met to ratify the Working Committee's decision that the party should join the proposed Constituent Assembly for framing a constitution for a free, united and democratic India. The father of the nation, Mahatma Gandhi, joined the meeting to guide the deliberations, and the Congress President appealed to the people to remain united and strong to prepare for the problems that would arise after ending the foreign rule. Persuading the Congress to join the Constituent Assembly, Mahatma Gandhi asserted that it should be a challenge. Painting a picture of free India, Mahatma Gandhi wrote that each village will be a republic with an all-powerful panchayat. He said life in non-violent India will not be a pyramid, but an oceanic circle where the individual will willingly perish for the village. He said every religion in free India will have an equal place. The spirit of the country is aptly described in the patriotic poems of Subramanya Bharati, who said, "India has 30 crore faces, but her heart is one. She speaks 18 languages, yet her mind is one." After a prolonged struggle, India became independent on the night of August 14th-15th, 1947. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. After nearly 3 years of deliberations, the Constitution was adopted and India became a republic on 26th of January 1950. We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, and the equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. Our Constitution is an expression of the democratic urge. The Constitution embodies fundamental rights and directive principles of policy
which assure many types of freedom. Our state is a secular state which gives equal opportunity to every group, every part of the country, every state, province and area. January 26, 1950, the day when the Constitution came into force, with Dr. Rajendra Prasad as Republic India's first president. It was in the true spirit of things that a 5-mile-long procession, marked by jubilation and patriotic fervor, was witnessed at the first Republic Day celebrations. Venue, the then Irwin Stadium, better known today as the National Stadium, New Delhi. And out of such an India of Mahatma Gandhi's dream emerged the Republic of India, an event we celebrate each year with pomp, show and splendor on the Republic Day parade, where the salute is taken by the country's president. An occasion when from the highest to the lowest mingle in a single large audience in keeping with the tenets of the Republic, where each citizen is equal with the same rights and duties. A republic whose spirit and purposeful drive has changed the face of India drastically in just short 38 years, from a poor backward country to a progressive and developing one with a distinct niche for itself in the comity of nations in the world. राजपथ का दृश्य। सुबह से ही लोग बराबर यहाँ आ रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड देखने। वो है इंडिया गेट, उन भारतीय सूरमाओं की यादगार जिन्होंने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। 60 फुट चौड़ा राजपथ इस समय राष्ट्रीय पताकाओं से सजा हुआ देख रहे हैं आप। Amar Jawan Jyoti at India Gate cradles the eternal flame which burns in homage to our immortal soldiers. It is an impressive monument with the names of Indian heroes chiseled into its beige Kota stone. So as you look down the broad sweep of Rajpath towards this massive memorial to the dead Indian heroes, you are reminded of those poignant lines. O love, they die in your rich sky. They faint on hill or field or river. Our echoes roll from soul to soul and grow forever and forever. Blow, bugles, blow, set the world echoes flying, and answer, echoes, answer, dying, dying, dying. Or again on some windy mountain crag in the high Himalayan snow wastes, far from home and loved ones, a marble plaque commemorates where they fell and died, defending to the last man, last round. And this one reads, when you go home, tell them of us and say, for your tomorrows, we gave our today.
इंडिया गेट, जहां अब कुछ ही देर बाद समस्त राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ये यादगार है उन शहीदों की जिन्होंने देश के लिए, अपने फर्ज के लिए अपनी जान दे दी, आन नहीं दी। और जो आप देख रहे हैं वो है इंडिया गेट के नीचे तीनों ध्वज फहराते हुए सेना के तीनों अंगों के, उस जवान के प्रति श्रद्धांजलि। इतिहास जिसकी यशोगाथा अनंत काल तक गाता रहेगा। और यह है इंडिया गेट से विहंगम दृश्य राजपथ का। आज का समारोह जहां भारत के अमर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से आरंभ होगा। राष्ट्र की ओर से शहीद सैनिकों को जो लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी करेंगे। यहाँ इंडिया गेट के बिल्कुल मध्य में एक अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है, जिस पर हमारी सशस्त्र सेनाओं के जवान रात दिन पहरा देते रहते हैं। यह अखंड ज्योति हमारे उन जवानों के साहस और त्याग की प्रतीक है जो मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। सम्मान जवान के प्रतीक के रूप में यहाँ तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि सैनिक अखंड ज्योति के समीप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, शस्त्र उलट करके। कुछ समय बाद प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी यहाँ पधार कर राष्ट्र की ओर से और अब सैनिकों को प्रधानमंत्री पधार रहे हैं इंडिया गेट की तरफ। इंडिया गेट के चारों ओर बने स्थल पर इस समय हजारों की संख्या में पुरुष और बच्चे अपने गणतंत्र दिवस को साक्षी करने के लिए यहाँ हैं। इंडिया गेट के चारों ओर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं और इंडिया गेट के मध्य चलती अखंड ज्योति के सामने के स्थान पर दोनों ओर रंगी फूल यहाँ खिले हैं, जो लगता है जैसे हमारे शहीदों की स्मृति में खिल उठे हों। अखंड ज्योति के सामने दोनों 10-10 की 2 पंक्तियों में अश्वारोही सैनिक खड़े हैं, जो हमारी रिमाउंट एवं वेटरनरी बोलते हैं और जिनकी कमान का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर A.P. सिंह। और ये है वो स्मारक अमर जवान ज्योति, रचना की जा चुकी है, जिसमें हमारी सेना के तीनों उस भारतीय सैनिक के प्रति श्रद्धांजलि जो उस धातु का बना है। वक्त और काल का अनंत प्रवाह भी जिस पर जंग नहीं लगा सकता। रिमाउंट वेटरनरी कोर के घुड़सवार सैनिक कृतज्ञ राष्ट्र इस समय उन शहीद जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, पर रण क्षेत्र में पीठ नहीं दिखाई। हमारे शहीद सैनिकों की स्मृति और उनके प्रति कृतज्ञता से खड़े हैं। मेरे कमेंटेटर बूथ के पास बैठने के लिए जो अलग अलग प्रकोष्ठ बने हैं, उसके समीप ही प्रकोष्ठ बना है जिसमें शहीद सैनिकों के परिवार भी बैठे हैं। इन परिवारों में वो मां भी है। प्रधानमंत्री इंडिया गेट की ओर पधार रहे हैं। शहीद जवान से बदलने रहे जिनकी वीर पति ने अपने रक्त से देश का अपमान का इतिहास लिखा है और शहीद सैनिकों की बच्चे हैं बेटी जिनके पिता ने देश के लिए समर्पित होकर देश प्रेम की भावना उन्हें प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी यहाँ अभी प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी यहाँ पधारे हैं।
सेना के तीनों अंगों के अध्यक्ष और रक्षा सचिव से उनकी भेंट करा रहे हैं। रक्षा मंत्री श्री और ये फूल जिन्होंने उनकी अगवानी की। पृष्ठभूमि में राष्ट्र ध्वज, इन फूलों में जिन्हें प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी अमर जवान ज्योति पर चढ़ाएंगे, इन फूलों में कृतज्ञ राष्ट्र की भावनाएं निहित हैं उन वीरों के प्रति जिन्होंने अपना आज दे दिया था, जिससे कि उनके देशवासियों का, आपका, हमारा कल सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री के साथ दाईं ओर हैं रक्षा मंत्री श्री वी नरसिंह राव। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पुष्पमाल अर्पित की। सारा राष्ट्र नतमस्तक है उन शहीदों की याद में।
प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में देश ने मौन श्रद्धांजलि अर्पित की उन सूरमाओं को, उन रणबांकुरों को जिन्होंने भारतीय सेना की कीर्ति पताका को सफलता और विजय के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर फहराया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव और तीनों सेनाध्यक्षों जनरल ए.एस. वैद्य, एयर चीफ मार्शल एल.एम. कात्रे और नौसेनाध्यक्ष आर.एच. तहलियानी के साथ वापस पधार रहे हैं। चारों जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ इस समय है, दूर दूर तक हाथ उठाकर दूर से प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का अभिनंदन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री अब सलामी मंच की तरफ आ रहे हैं, जहां कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह पधारेंगे। परेड आरंभ होगी। आजादी के बाद देश निरंतर लगातार अपने मंजिल सुख समृद्धि के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। खेती बाड़ी, कल कारखाने, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान, कोई भी क्षेत्र आप लें, सब क्षेत्रों में कार्य हुआ है, तरक्की हुई है, हो रही है। विकास और प्रगति दोनों। Independence came on the 15th of August 1947. India dedicated herself to the rebuilding of her shattered economy, to eradicate poverty. Since 70% of India's population depended on agriculture, the first thrust for the removal of poverty called for the transformation of her agriculture into a modern, progressive enterprise. India built massive dams all over the country. For industrial development, energy is one of the most basic needs. Thus, each five-year plan has laid greater emphasis on power generation. In a remarkably short time, India has trained a vast army of technicians and engineers in the difficult field of oil exploration. India-made railway equipment is now being used in many foreign countries. India has taken giant steps into space. The Bhabha Atomic Research Center is the largest single scientific establishment in the country, working on the peaceful application of atomic energy. But there is still much to be done. We are only at the beginning of the great transformation that must be achieved. We have the inner strength and the technological capacity to solve our problems. Therefore, let us get on with the job with zest and faith. Faith in one another, in ourselves, and faith in India. In villages, towns, and cities, in the high snow-clad Himalayas and the barren desert where the tricolor of the Republic. और अब प्रधानमंत्री सलामी मंच के निकट पहुंच रहे हैं। अभिवादन स्वीकार करते हुए राजपथ के दोनों एकत्र जन समुदाय से, देशवासियों से। You can see the Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi, in an open jeep, arriving at the saluting stage. People clapping their hands are welcoming him. प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं इस समय तीनों सेनाध्यक्षों, थल सेनाध्यक्ष जनरल ए.एस. वैद्य, उनके बाद नौसेनाध्यक्ष आर.एच. तहलियानी और वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एल.एम. कात्रे के साथ।
जहाँ तक राजपथ पर इस समय मौसम का प्रश्न है, सुहावना, ठंडा, बीच बीच में धूप की हल्की पीली किरणें बादलों की ओर से बाहर निकल धरती पर आ उतरती हैं। उधर प्रधानमंत्री इस समय आमंत्रित अतिथियों और राजधानी में विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो इस समय हमारे देश में पधारे हुए हैं, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के साथ परेड देखने के लिए पधारेंगे। Today's parade will be led by the contingents of the armed forces with their marching and mechanized columns. The units of the armed forces have been drawn from three services: the Army, the Navy, and the Air Force. These men of the armed forces have come from different parts of the country, reflecting the unique characteristics of this great land: unity in diversity. They are the epitome of national integration. प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी इस समय यहाँ सलामी मंच के दाईं ओर हमारे विदेश से आए व्यक्तियों और विशिष्ट व्यक्तियों से भेंट कर रहे हैं। और अब कुछ ही देर में राष्ट्रपति पधारने वाले हैं। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और फिर आरंभ होगी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य परेड। और उसका आंखों देखा विवरण सुनाने के लिए इन दृश्यों के साथ अब कमांडर श्याम वर्मा। Thank you, Jasdev. The clouds have come over the Rajpath. It was a little more bright a little while ago, but now it isn't, and you can probably see from this camera placed on top of India Gate. And now, arriving at the saluting base, Mr. Venkatraman, the Vice President of India, being received by the Prime Minister and the Defence Minister. He will be, the three service chiefs are presented to him: General Vaidya, Admiral Tehrani, Air Marshal Katre, AG Marshal Katre, and then of course Mr. Bhatnagar, Defence Secretary, and Mr. Shastri, Additional Secretary in the Ministry of Defence. Mrs. Sonia Gandhi talking to the Vice President and Mrs. Venkatraman. And now they move up to the dais, which is built some distance, as you will probably see, from the main Rajpath. And after escorting the Vice President, the Prime Minister will go down and then await the arrival of the President. You get a very good idea now of where the President is going to sit. And now, arriving in front of the saluting base, the family of the President. Mrs. El Singh. She being received by the Prime Minister and also the President's daughter. Mrs. El Singh in a white shawl.
awaiting the cameraman. And now the Prime Minister goes to the Rajpath again and will await the arrival of the President, who, as usual, will be escorted by the President's bodyguard, and there you can see them in a distance. This would be an appropriate place to tell you that the President's bodyguard, apart from being the bodyguard to the President, is the senior-most regiment of the Indian Army with a history of over 200 years. It is the only unit of the Indian Army that takes part in all ceremonial duties. Leading the contingent is the Commandant of the bodyguard, Lieutenant Colonel H.S. Sodhi, who, apart from being the Commandant, is also one of the foremost polo players of this nation. And the uniforms, scarlet jackets, blue and gold turbans, gold belts, white breeches, black boots, and the flag on their lance, a red and white burgee. Bodyguard are an elite regiment, and as the President's car approaches the saluting desk, you find the bodyguards will go left and form up facing the saluting desk for the national salute, which will be ordered by Colonel Sodhi. A beautiful sight. And the presidential car, you might see the other flag, which is the flag of Argentina, because His Excellency Raul Alfonsin, the President of Argentina, is the chief guest at the Republic Day Parade this year. At the national salute, the flag will be unfurled and a 21-gun salute will be fired. As the presidential car stops and the President alights from the car, he is received by the Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi, and Mr. Narasimha Rao, and there's the President of Argentina, a very good sight of him. That's Mr. Narasimha Rao shaking hands with the President of Argentina. And now, the turn of the three service chiefs. The President meets General Vaidya, Admiral Tehliani, Air Chief Marshal Katre, and so does the President of Argentina. Then the Defense Secretary, Mr. Shashikant Bhatnagar. The President of Argentina has had far and wide-ranging talks with the leaders in India. President in a beautiful grey sherwani and a lovely red rose for which he's become so famous. Escorted by two ADCs. President slowly goes to the saluting base, and once he is in position, we shall have the national salute, the national anthem, the 21 guns, and the unfurling of the national flag, which is directly in front of the President. And as the VIPs take their positions, we await Colonel Sodhi's command for national salute.
और अब शुरू होता है आज के समारोह का सिलसिला। And as the national salute is over, President Bodegaard turns smartly to the left and proceeds away from the saluting base. And the gun salute today is being fired by the artillery regiment, the 1721 Field Battery, under the command of Major Pillai. Position of the field battery being slightly to the right and on the opposite side of Rajpath from where the President sits. आज का ये आयोजन शुरू हुआ। And while we wait the 21 gun salute being over, all eyes on Rajpath, like every year, go to the left, because soon we should have an arrow formation walk of Mi-4 helicopters, one with the national flag, one with the inter-services tricolor ensign, and of course the two on the sides would be showering the people gathered on both sides of Rajpath with rose petals. There they come. The Mi-8 helicopters, as you can see, the national flag as well as the services ensign. And the two on the sides, when they come here, you probably will see throwing rose petals and tinsel, so it makes a very pretty picture indeed. This unit is being commanded from Ishi's command by Wing Commander M.S. Chahal. And as the helicopters proceed towards India Gate, if you look towards Vijay Chowk, you can see in a jeep the parade commander. And now appearing on your screens, the parade commander, Major General J.S. Jambal, General Officer commanding Delhi area. This is his first time that he's commanding a Republic Day parade. We're going past the President saluting. Commissioned in the Army in June 1953. He became a Major General in August 1982 and commanded an infantry division in the Western Sector. He took over as GOC, Delhi area, in August 1984. The parade is commanded up to the intersection of Mansingh Road and Rajpath by General Jambal, and from there onwards, the 2 IC of the parade, Brigadier A.S. Parar, Commandant to the Rifles Regimental Center, will command the parade. General Jambal. Following the parade commander are the winners of the Paramveer Chakra, Ashoka Chakra and Victoria Cross. And now that is Lieutenant Colonel Hushar Singh, winner of Paramveer Chakra, in the leading jeep saluting the President. All others with him are Lieutenant Colonel Dhan Singh Thapa, Major Jas Ram Singh, the 3 Paramveer Chakra winners, then Captain Peetawala, Shri Hukum Singh, Shri Lakhan Singh, Shri Govind Singh, Shri Dhanpat Singh, Shri Purelal,
the Ashok Chakra winners. And in the last jeep, Subedar Major Honorary Captain Bhandari Ram, the lone Victoria Cross holder who is on parade today. The various winners of Ashoka Chakra now. That is Captain Pitawala, who's just saluting the President, and now Squad Leader Rakesh Sharma, who, as you all know, is the lone Indian who went into space last year. Captain Pitawala, Subedar Major Honorary Captain Bhandari Ram, the lone Victoria Cross holder who's on parade today. Victoria Cross Vijeta, Subedar Major Honorary Captain Bhandari Ram. And now coming into view, the 61st Cavalry under the command of Major KBS Jamwal. To give you an idea of what they're wearing, blue jackets, red and blue turbans, white breeches, gold and red belts, black boots, and on their lances, the red and white burgee. 61st Cavalry was raised in 1953 and got its designation as 61st Cavalry in 1964. Apart from being the only mounted regiment, horse-mounted regiment in the Indian Navy, in the 1982 Asian Games it won 3 gold medals. And now the band opposite is playing light cavalry, the band of Maratha Light Infantry Regimental Center and the Pioneer Corps Training Center, playing light cavalry. And directly behind 61st Cavalry, the Remote and Veterinary Corps contingent led by Major K.S. Rao, one of the oldest regiments of the Indian Army, raised in 1779. It is a highly technical and specialized corps. Apart from horses as they are riding, they also have army dog squads of immense use for security both in war and in peace, wearing maroon turbans and gold, maroon jackets, white breeches, black boots, and on the burgee is maroon and yellow. And first off the mechanized columns, manufactured at the Heavy Vehicles Factory in Avadi in Tamil Nadu, the Vijayanta tank, fitted with the 105mm high velocity gun, one of the finest tank weapons. This contingent is under the command of Major D.S. Shivram in the leading tank. It's a medium tank which has a cruising range of over 300 kilometers and in battle a maximum speed of 48.5 kilometers an hour. The regiment from which these tanks are taken are the Roaring Fours, and that is Major Shivram who's saluting the President. And the battle camouflage. A very good view of the gun and the tracks, which enable this tank to proceed in terrains which are virtually impossible for anybody else to approach. And the medium machine gun that you see barrels dipping in salute as they go past the President.
And directly behind Vijayanta are the T-72 tanks, contingent commanded by Major H.S. Sidhu, one of the best tanks in the world. And Major Sidhu in the leading T-72 tank saluting the President. These tanks have a 125mm smooth bore gun, a 12.7mm anti-aircraft gun and a 7.62 medium machine gun, which you can see pointing rearwards. They belong to Skinner's Horse, the oldest cavalry regiment of the Indian Army, raised in 1803. The T-72 tanks. And Captain P.K. Das in the leading jeep, commanding this contingent of the 130mm self-propelled catapult guns. This is India's first indigenous self-propelled artillery weapon, a range of 30 kilometers, and this gun can be used both against aircraft as well as giving ground support to troops on the front. The personnel of this contingent are from a medium regiment, which was first raised in 1943. Mounted on a tank chassis, and now saluting the President is the contingent commander Major Gurdeep Singh of the 122mm multi-barrel rocket launcher. That's Major Gurdeep Singh. This contingent comprises of a rocket troop consisting of 3 rocket launchers manned by a crew of 5 Jawans, including the driver. And the 40 rockets that you see can be fired in just 20 seconds and have a devastating effect on the enemy. Contingent manned by the rocket regiment of the Indian Artillery. And now Captain Salaria, contingent commander of the Shilka, saluting the President. This is primarily designed to provide low-level air defense to armored formations. It has radar, as you can see, which is a range of 20 miles, and up to 2,500 kilometers. These guns have a devastating effect on any approaching aircraft. It's a composite air defense regiment raised in 1966. The Shilka.